Hello students, welcome to Vidya Educational Research Foundation. I am Afzal Khan, your English teacher. Today we will start our Middle English period that starts from 1340 to 1550. In that we'll study about age of Chaucer that starts from 1340 to 1400, and second age starts, that is revival age, 1400 to 1550. This altogether is known as Middle English period. As we have read in our previous class, that is Anglo-Saxon age, and now today is the age of Middle Age, that is 1340 to 15. Now we have two ages together. First we will read about the age of Chaucer. Age of Chaucer starts from 1340 to 1400. In the age of Chaucer, we will read that the literature has three stages. As we have read that the Chaucer worked during the reign of three different kings, Edward II, then Richard III, and Henry IV. So he worked during three different kings. So the first stage of literature of Chaucer is French. Second is Italy, and the third is English. That it was asked in PYQ that out of four, which is not the stage of literature of Chaucer. So we have three stages of literature: French, Italy, and English. We will read one by one that what were the literatures during these periods. First, we will read about French. So the age of Chaucer, the first stage is French. During the time of Edward III. So as we have read that he went to France to spy, but he was caught and he was paid 16 pounds by Edward III for coming back. So in the age of French literature, the first book written by Chaucer was the Book of Duchess. The Book of Duchess. It is his first book, which was written on the death of Lancaster, the Book of Duchess. So here we have discussed the death of Blanche. The death of Blanche. This book describes about the death of Blanche. It is written in dream allegory. And it is octosyllabic couplet. Octosyllabic couplet. So this was the first book written by Chaucer in the year 1369. Second work of French literature, and that was Romance of the Roses, or we can say the Roman de la Rose. Roman de la Rose. It was in French. The translation version is Romance of the Roses. Romance of the Roses. So this work was praised by a French critics, and he was Eustache Deschamps. It was asked in PYQ. So we should know about the critics also who criticized the work. So these two works mainly were written during his French period. So it asked in the exam that what were the works written during the French period. So the first book is the Book of the Duchess, and the second is Roman de la Rose. Now the second phase was Italian phase. Or it was the time of Richard II. He was the king. During the time of Italy, he went for the tour to Italy and he came in contact with Petrarch. So he wrote some work that is Complaint unto Pity. Complaint unto Pity. First work of Italy time. Second work is the Parliament of Fowls. Parliament of Fowls. So it was written on the marriage ceremony. Parliament of Fowls, the second work during Italian time. It was written on the marriage of
Richard II, with Anne of Bohemia. So this work, these two work, with the third work, important work, is House of Faith. House of Faith. This is also his work was Dream Allegory, जिसमें इन्होंने बताया कि there are three types of people. One who is working, but he is not dependent on the result. जो काम कर रहे हैं, जिनको ये नहीं पता कि वो फेमस होंगे कि नहीं होंगे. सेकंड था जो काम कर रहे हैं लेकिन वो फेमस होने के लिए काम कर रहे हैं. एंड थर्ड, जो काम कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन वो चाह रहे हैं कि वो फेमस हो. ऐसे में जो फर्स्ट पर्सन थे कि जो काम कर रहे हैं लेकिन वो चाह नहीं रहे हैं कि वो फेमस हो, ऐसे लोग ही जीतते. तो हाउस ऑफ फेम is the dream allegory. And the last his work is Troilus and Cresside. Troilus and Cresside. This work, the source is Homer's Iliad. We should know the source also. Homer's Iliad. Next work is Legend of Good Women. जब हमने ट्रॉयलस एंड क्रिसाइड जब उन्होंने वर्क लिखा तो उसमें उन्होंने विमेन को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया, जिसको पढ़कर गॉडेस आई उनके ड्रीम में और उन्होंने कहा कि आपने विमेन को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है. सो उनको एक मौका दिया कि एक वर्क और लिखने का, चौसर को. तो चौसर जब अपने ड्रीम से उठते हैं तो वो विमेन के बारे में अच्छा लिखते हैं, जिनका एक वर्क था लीजेंड ऑफ गुड विमेन. ये रिस्पॉन्स में लिखा इन्होंने जब इन्होंने ट्रॉयलस एंड क्रिसाइड लिखा, उसमें विमेन को सही तरह से डिफाइन नहीं किया, इसलिए उन्होंने लीजेंड ऑफ गुड विमेन लिखा, जिसमें उन्होंने 9 विमेन की स्टोरीज लिखी, 9 विमेन को डिस्क्राइब किया. तो इस तरह से द लीजेंड ऑफ गुड विमेन इनका एक वर्क है जो एक इनकम्प्लीट वर्क है, जिनको ये पूरा नहीं कर पाए थे. इट वाज हिज इनकम्प्लीट वर्क. Now the third stage starts, and that stage is the English stage. In this era, in this time, he wrote his masterpiece, and that is the Canterbury Tales. So he wrote during the reign of Henry IV. Henry IV was the king at this time. So he wrote his masterpiece, the Canterbury Tales. Canterbury Tale was written in during the age is 1399. So जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि इसमें जो स्टोरीज हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कैरेक्टर्स के बारे में पूछता है, इसका सोर्स पूछता है, उसका एग्जांपल पूछता है, उसके कैरेक्टर्स के नेम पूछते हैं. सो हम इसको ज्यादा डीपली पढ़ेंगे. तो कैंटरबरी टेल्स में जो इन्होंने स्टोरी बताई थी, उसमें इन्होंने स्टार्ट किया था कि 29 पिलग्रिम्स थे, 29 पिलग्रिम्स, वन होस्ट द हैरी बेली एंड वन नरेटर दैट इज चॉसर. तो टोटल हमारे पास कितने पिलग्रिम्स हो जाते हैं? 31 पिलग्रिम्स. इसमें इन्होंने स्टार्ट किया था, हैरी बेली जो होस्ट था उसने कहा था कि 2 स्टोरीज जाते टाइम, 2 स्टोरीज वापस आते टाइम हम डिस्क्राइब करेंगे. तो टोटल हमारे पास कितनी होनी चाहिए? हमारे पास होनी चाहिए 124 स्टोरीज होनी चाहिए, जिसमें से सिर्फ कितनी कंप्लीट होती है? 22 कंप्लीट होती है, या कुछ लोगों माने 24 कंप्लीट होती है. और इस तरह से ये इनकम्प्लीट होता है. लेकिन इसमें जो स्टोरीज, जो टेल्स बताते हैं, वो स्टोरीज और टेल्स जो है वो हमारे पास डिफरेंट तरीके के जो नरेटर है वो स्टार्ट करते हैं, जिसमें से सबका प्रोज में हमारे पास प्रोज में आता है सिर्फ 2 वर्क. प्रोज में 2 वर्क होते हैं, और जो नाइट के होता है और चौसर का होता है, और पार्सन का होता है और चौसर का होता है. तो इस तरह से ये हमारा कैंटरबरी टेल है, जिसमें जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं उन लोगों ने अपनी अपनी स्टोरीज बनाई. जैसे हमारे पास नाइट्स टेल आते हैं, नाइट्स ने अपनी टेल सुनाया, पार्सन ने टेल सुनाया. Then we have nun priest tale. Reeves tale. And so on. हमारे पास ऐसे टेल्स की पूरी स्टोरी इसमें है, जो हर एक के पार्ट में, कैरेक्टर में डिस्क्राइब करते हुए ये ओवरऑल जो कैंटरबरी टेल है
इसको बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया और इसको लोगों ने इसको तारीफ भी की। इसमें जो कैरेक्टर्स थे वो पूरे पूरे यूरोप के बारे में डिस्क्राइब कर रहे थे। डिफरेंट कैरेक्टर शो डिफरेंट पीपल ऑफ द कंट्री। सो इस तरह से जो हमारा कैंटरबरी टेल है ये हमारा काफी मास्टरपीस बन जाता है, द कैंटरबरी टेल ऑफ मास्टरपीस ऑफ चौसर, जिसको काफी लोग स्टडी करते हैं। तो हर एक के टेल जब हम पढ़ेंगे तो वो टेल से ही डिफाइन हो जाएगा कि किसने कौन कौन से कैरेक्टर है। जैसे हमारे पास इसमें एक आता है वाइफ ऑफ बाथ, वाइफ ऑफ बाथ। अब जो टेल्स इन लोगों ने सुनाई थी उस टेल में एक एक टेल्स जो हम पढ़ेंगे उसमें जो नन प्रीस्ट टेल है वो बताती है बीस्ट फेबल, बीस्ट फेबल। तो ऐसे जो सोर्सेज हैं, फिर उसके वर्ड्स क्या है, वो किस जॉनर में लिखी गई हैं, तो ये जॉनर, ये वर्ड्स, उसके एग्जाम्पल, उनकी समरी, ये सारी हमारी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल जो है उसमें जो पूछा जाता है वो कितने पिलग्रिम्स हैं। सो वी हैव 29 पिलग्रिम्स along with one host. The name of host is Harry Bailey. And narrator, who is narrator? Narrator is Chaucer himself. तो ये हमारे पास कैंटरबरी टेल्स की कुछ ऐसे चीज दिए हुए हैं जिनको हम स्टडी करके ये बता सकते हैं कि कौन से किससे रिलेटेड है। तो 3 stages we have read, 3 stages of literature during the age of Chaucer. The first was French, second is Italian, and third is English. So to know more about the English, that is my Canterbury Tales, follow us and join our group. Thank you so much.